Divisional Commissioner Kashmir, Shri Pandurang Pole, DIG of Central Kashmir Range, Shri Sujit Kumar, District Magistrate and District Development Commissioner of Srinagar, Mohammad Ejaz Saab, audience, academicians, officers from district administrations, officers from engineering departments, irrigation flood control department, officers from Jammu and Kashmir Economic Reconstruction Agency, dignitaries who are connected online, the Secretary of DMRRR, Shri Nazim Khan Saab, the Head of Disaster Portfolio in the country, Shri Deepak Singh in the World Bank, Manzoor Khan Saab, and RMSI and the entire team, Mr. Johri and his entire team. A very warm welcome to all of you today, this morning. Ladies and gentlemen, आज का ये function एक workshop है in which we are going to discuss, deliberate, brainstorm upon the various aspects of disaster management in Jammu and Kashmir. This is Kashmir specific. We are going to do a similar function in Jammu division, and in this function we are restricting ourselves to 3 or 4 very important interventions by this project. Let me just give you a backdrop of the necessity और ये function करने की ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, why do this function? Ladies and gentlemen, you are all aware that in the floods of 2014, there was immense damage to life and property in Kashmir division and some parts of Jammu division. Around about 300 people by various estimates lost their life. Approximately 26,500 structures got damaged. The farm sector had 3.27 lakh hectares of agricultural land which got damaged. 3.96 lakh hectares of horticulture damage took place. And the flood had a various multi-dimensional adverse impact across sectors of our economy, especially the tourism, which could not recuperate many, many months after the floods because of infrastructure damage and because of the overall damage to the socio-economic fiber of our UT. Similarly, Ladakh in July-August 2015 received unusual spells of rain and flash floods which damaged to the extent of around about 88 crores in Leh and around about 80 crores in Kargil. This is infrastructure damage, just infrastructure damage that had been built in a very difficult terrain. Damage to irrigation canals, damage to equipment, damage to fertile land which was buried under the debris took place, which has had ripple effects to this date because of those flash floods. More recently, in October 2021, the Uttarakhand flash floods caused us a loss of somewhere around, estimates are that 7,000 crore rupees were lost, damage worth 7,000 crore rupees took place because of the Uttarakhand flash floods. Similarly, according to the UN report, Cyclone Amphan of 2020 resulted in a $14 billion loss to the economic structure of our country in the areas that were impacted. Our country has faced somewhere around 117 cyclones since 1970, due to which more than 40,000 lives have been lost, especially on the east coast of the country. Due to extreme weather events, be it the Uttarakhand flash floods, be it other areas, be it seismic events, somewhere around 40,000 lives have been lost over these 4 or 5 decades. And due to cyclones and floods. Due to floods alone in Kosi and other areas of the country, somewhere around 60,000 lives have been lost over time. These are astronomical figures. The loss of a single human life is painful, is a great deal, not to talk of 60,000 lives being lost over a period of time. All this, ladies and gentlemen, is probably not completely preventable because natural disasters occur, natural disasters happen. We probably don't have the wherewithal or the power to control them, but they can be mitigated by way of disaster risk resilience. After having given you a background of why this topic and this workshop is important, I would like to underline why this is specific to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a multi-hazard disaster-prone union territory. While we have urban flooding, which we witnessed in the summers of 2014, we also have seismic activity, which we have witnessed
in the summers of 2005 in Uri and areas of Pakistan occupied Kashmir. Likewise, there are various disasters which have happened by way of climate change, which are getting accentuated by the day as we speak. In my childhood in Kashmir, having been born, brought up here, we probably did not use air conditioning at all. We didn't have air conditioning in Kashmir. And now every house has air conditioning in Kashmir. You probably cannot stay without ACs in the peak of summers in July, or you cannot use your vehicle without air conditioning in July and August probably. 30 years back, nothing of this sort was in prevalence. So therefore, that is a clear indication of climate change and disasters to come. Hydrometeorological disasters, seismic disasters, and agriculture, horticulture allied disasters. What was the motivation of conducting this workshop? The motivation is to sensitize all necessary stakeholders. The most important stakeholders in any disaster management are probably the various departments in the division, in the Kashmir division, headed by Divisional Commissioner Kashmir, and the police administration headed by Inspector General of Kashmir. The first respondents are always the revenue and the police, the Thana and the revenue agency are the first respondents, along with the irrigation flood control if it's a hydrometeorological disaster, or allied departments. So therefore, this is an attempt to bring all of you together to brainstorm so as to make sure that we discuss how to prevent. In the Jhelum Tawi Flood Recovery Project, which is a $250 million World Bank aided project, which is happening in Jammu Kashmir since 2016. In the first 4 years, the progress of this project was slightly on the lower side, but you will be happy. I'm very happy to share with all of you that in the last 1.5 years, we have made astronomical progress. With God's grace, this project has been a story of turnaround. And one of the core areas that we are working in is disaster management, disaster risk mitigation, disaster resilience, and building structures and systems which are helpful in preventing the outcomes of a disaster. To that end, administratively and academically relevant interventions have been chalked out and are now ready for implementation. इसलिए आप सबको यहाँ ज़हमत दी गई है, यहाँ तशरीफ लाने की ज़हमत दी गई है. What are the various initiatives that have been taken by this World Bank project? आपके perusal के लिए I'll quickly submit to all of you. Number one of the biggest disasters that happened was 2005 seismic activity, massive loss to infrastructure in rural areas, in urban areas also. So therefore, we did not have an updated building code. We have revised that building code, and that is now ready for inauguration. We have shared it with relevant departments. We are now willing to make it into public domain so that all of us can probably construct government, public sector and private sector buildings with that perspective. कि कल को अगर God forbid if there is a high seismic activity, we can prevent loss of life by that. Again, we have done bathymetric surveys of Jhelum and Tawi rivers, in which we have done flood inundation mapping. We have made sure that कौन से area में flood inundation हो सकती है कितने rainfall पे. The third thing that we have done is in a major intervention is urban flood management in the city of Srinagar. Srinagar has taken hit in 2014 floods, so उसमें अब हमने we have made 49 dewatering stations. We have officers from the Srinagar Municipal Corporation, the Smart City, the District Magistrate is here, Divisional Commissioner, DIG साहब यही हैं. So you will have seen a very positive impact of these interventions कि अब जो low-lying areas पहले inundate होते थे lack of drainage की वजह से या dewatering नहीं होने की वजह से, now what we have done is we have made sure that those low-lying areas are augmented, dewatering capacities are done, and furthermore best technologies like submersible pumps are also put in. In the 2014 floods, my observation, having been an SDM in Srinagar that time, was that most of our dewatering pumps got inundated in water. They did not have the wherewithal or the capacity to resist that. Now we have procured and installed submersible pumps, which are operative. If electricity is not present, they are operative on diesel and they can be run even in a flooding inundation scenario. Likewise, one of the major impacts of this disaster or any disaster is on livelihoods over the long term. Livelihoods took a major impact. For example, the handicrafts handloom
for example, the various tourism-related sectors took a bad impact. So therefore, this project started off with a cluster-based approach on paper mache, on crivel, on willow wicker, and all these are now for everybody to see. In Bemina, we have inaugurated, Honorable LG has inaugurated a massive, wonderful, state-of-the-art wool outlet, which is run by the JK Industries. In Rajbagh, we have upgraded in a big fashion the silk industry, which was in doldrums. Now it's much better. The sales are much better. The infrastructure is much better. Likewise, paper mache, we have sort of intervened at multiple levels to make sure that this initiative is taken off. These were the few initiatives that we have taken. I will close my address by saying that the purpose of this entire workshop is a mindset change, is a change from relief, rescue, rehabilitation to preparedness, prevention, mitigation. So from that, immediately realizable to us, but assuming, God forbid, that there occurs a disaster event, this function will be the intellectual hub for the management of that disaster event. And we will prevent a lot of loss of life by deliberating well and discussing things well and implementing at a policy level various initiatives. And I am hopeful that because district administrations are represented very widely here, the police is represented, and every other stakeholder, irrigation, flood control, the R&B department, which is massive in terms of importance, is represented. The academicians are here. I am hopeful that we will come and arrive at some policy interventions which are not just academically oriented but are administratively relevant. जो आप जिला सतह पे या सब डिवीजन लेवल पे या थाना लेवल पे या AEE लेवल पे या JE लेवल पे कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. All these initiatives like the decision support system, the multi-hazard risk assessment, the integrated operational forecasting system, जिसके बारे में आज पूरे दिन आपको पता लगेगा, these are administratively relevant besides being academically relevant to all of us. I will rest my speech. Thank you very much, Divisional Commissioner Kashmir Sahab. Thank you very much, DIG Sahab. Thank you very much, DC Sahab, for gracing this function, and thank you all of you for taking out the time to be part of this. I would like to say special thank you to Deepak Singh Sahab, who is the head of disaster management, and Professor Ravi Sinha from IIT Bombay, and all those whose names I missed out, especially Nazim Khan Sahab. Thank you very much. I wish you well. I wish that we have a productive, we have reporters for this entire event who will record the conversations, who will record the discussion points. सेंट्रल कश्मीर रेंज के DIG सुजीत कुमार जी, उनके साथ JKERA के CEO अबीद सईद जी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जिन्होंने यहाँ अपने ख्यालात रखे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमसे जुड़े थे, वो सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट और वर्ल्ड बैंक के दीपक सिंह जी. ईरा JKERA ये दो वर्ड्स को मैं कंटेक्स्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ईरा में कुछ एक पीरियड के लिए रहा था. ईरा बेसिकली 2004 में कंस्टिट्यूट हुई थी, जुलाई 2004, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी. तो रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि पहले कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है. मिलिटेंसी का दौर जो रहा 2004 तक, जो है उसको 14 साल हुए थे. बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खराब हो गया था, डैमेज हो गया था. उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ईरा एस्टेब्लिश हुई थी. उस समय मैनमेड डिजास्टर से जो डैमेजेस हुए थे वो ईरा के जान में था. तो रोड्स, ब्रिजेस, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरा में बनाया गया. उसी के साथ जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, उसी के साथ जो है 2005 में अर्थक्वेक आ गया. उसके बाद 2014 में फ्लड आ गया. तो फिर से लगा कि नहीं, मैनमेड डिजास्टर्स या लॉ एंड ऑर्डर से जो डैमेज हुआ है उससे भी ज़्यादा कहीं नेचुरल डिजास्टर्स से भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, पब्लिक एसेट्स डैमेज हुआ है. तो उसको रिकवर करने की ज़रूरत है. उसी के कंटेक्स्ट में झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स 2016 में स्टार्ट हुआ.
दोनों का नाम डिफरेंट है, दोनों की कंटेक्स्ट डिफरेंट है, दोनों की मैंडेट जो है वो डिफरेंट है, हमने वो समझने की ज़रूरत है। अब बेसिकली जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस है जम्मू एज वेल एज कश्मीर के दोनों डिवीज़न के, और उसमें रिवर्स पर ज़्यादा भर दिया है। अगर डिज़ास्टर्स की लिस्ट देखूँ तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स है जो यहाँ होते हैं, सुनामी छोड़ करके मेरे ख्याल से हर कोई डिज़ास्टर यहाँ कश्मीर वैली में होता है। सुनामी क्योंकि इसको सीशोर नहीं है, उससे चलते होगा नहीं, लेकिन बाकी कोई भी डिज़ास्टर ऐसा नहीं कि जो यहाँ नहीं होता है। लेकिन दो डिज़ास्टर है जो पैन जेन के कह सकते हैं, एटलीस्ट पैन वैली तो है। एक है फ्लड है, दूसरा अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक में ज़्यादा अर्ली इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए उतना स्कोप नहीं है, लेकिन फ्लड में है। उससे चलते मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का नाम JTFRP रखा गया, और वो सही भी था। सिर्फ फ्लड के अलावा उन्होंने दूसरे भी डिज़ास्टर्स की स्टडी की है, और स्टडी का जो आज वर्कशॉप रखा है उसमें उनके जो कंसल्टेंट है डिटेल में बताने वाले हैं। हज़ार्ड प्रोननेस, कौन कौन से लोकेशंस है अलग अलग डिज़ास्टर्स पर, कौन से मैग्नीट्यूड तक डिज़ास्टर्स हो सकता है, और उस पर क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस पर जो टेक्निकली स्टडीड डॉक्यूमेंट्स है वो आज इस वर्कशॉप में रखने वाले हैं। तीसरा जो डिज़ास्टर या जो लार्जर कॉज है वो है क्लाइमेटिक चेंज। फर्स्ट हो गया लोकलाइज्ड डिज़ास्टर्स, जिसको हम कुछ एक एरिया में, तहसील या ज़्यादा ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जा सकते हैं, जिसमें फ्लैश फ्लड्स है, लैंडस्लाइड्स है, अवलांच है। फ्लड और अर्थक्वेक लाइकली है कि पूरे यूनियन टेरिटरी तक भी अफेक्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करने वाला है। यहाँ पर आज के इस मल्टी हज़ार्ड रिस्क असेसमेंट वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी हमारे डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग पोले साहब, यहाँ पर डाइस पर हमारे DIG सेंट्रल सुजीत कुमार साहब, CO एरा आबिद रशीद शाह साहब, हमारे साथ वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए सेक्रेटरी DMRR नाज़म ज़िया खान साहब और दीगर जो लोग हैं, प्रोफेसर रवि सिन्हा, दीपक सिंह जी, और इस हाल के अंदर मौजूद तमाम ऑफिसर साहिबान, चाहे वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से हैं और दीगर महकमा जात से हैं। आज का जो ये वर्कशॉप है, इसकी अहमियत मुझे लगता है कि इस हाल के अंदर बैठे हुए एक एक शख्स को बहुत अच्छे से मालूम है, और वो इसलिए कि 2014 के फ्लड्स में हम सभी कहीं ना कहीं पानी से घिरे हुए थे, और इस तरीके से घिरे हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था किस तरफ छलांग लगाएं। छत के ऊपर जाएं, कोई कश्ती आ जाए, हमें यहाँ से किसी ऐसी जगह ले जाए जो सेफ हो। मुझे याद है कि सितंबर 2014 के फ्लड से 4 दिन पहले ही हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी एज SDM, और मैं बडगाम में था। तो जो सूरत हाल थी वो इस तरीके से थी कि पूरा जो हमारा सरकारी अमला है सारे का सारा कहीं ना कहीं अपने घरों में ट्रैप था, और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स भी कई दिनों के बाद जब बोट्स आई फिर रेस्क्यू किया गया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिजास्टर जब आती है तो ऐलान करके नहीं आती। अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे खतरनाक बिहेवियर है किसी भी डिजास्टर का। Respected Pandurang Police Sir, Divisional Commissioner Srinagar, respected Shri Azaz Khan Sahab, Deputy Commissioner Srinagar, respected DP Sayyid Abid Rasid Sahab, CEO JKERA,
प्रोफेसर रवि सिंह, प्रोफेसर दीपक सिंह जी, इस हॉल में मौजूद हमारे तमाम खास मेहमान, पार्टिसिपेंट्स और ऑनलाइन इस आज की कॉन्फ्रेंस में शामिल हमारे तमाम मेहमान, आप सबको जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से और कश्मीर जोन पुलिस की ओर से मेरा सुजीत कुमार सिंह का नमस्कार व आदाब। मैं शुक्रिया अदा करता हूं JKERA का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस डायस से कुछ अपने तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आपको पता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज न सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री पुलिस और आर्मी डिजास्टर मिटिगेशन और उसके मैनेजमेंट के एक अहम पार्ट रहे हैं। इस वजह से अपने सर्विस के 16 इयर्स में मुझे जरूर कुछ ऐसे तजुर्बात हासिल हैं जिनसे मैं आज की इस महफिल में, आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ अपने पॉइंट्स वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। मैं शुरू करता हूं अपने बैकग्राउंड से। एक बिहारी होने के नाते और गंगा किनारे पटना से होने के नाते मैंने बाढ़ को बड़ी करीब से देखा है। सैलाब हर साल आना बिहार में एक दस्तूर रहा है, और खासकर नॉर्थ बिहार जहां पे कोसी रिवर आज भी अनकंट्रोल्ड है आज़ादी के 70-72 सालों बाद, क्योंकि अगर उसे कंट्रोल किया जाए तो नेपाल डूब जाएगा और अनकंट्रोल्ड रहने से बिहार डूबता रहेगा। गंगा की बाढ़ भी हमेशा आती रही, तो सैलाब देखना हमारी फितरत में, एक बिहारी की फितरत में शामिल है। और जब मैं बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैंने सैलाब के अजाब को बड़ी तरीके से करीब से फॉलो किया। एक बात मैंने हमेशा फॉलो किया कि हमारी सड़कें डूब जाती हैं लेकिन ट्रेन चलती रहती थी। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता था ऐसा क्यों होता है, हम लोग बसेस से नहीं जा पाते लेकिन रेलवे स्टेशन चले जाते हैं तो वहां से हम लोग जा पाते हैं। बड़े बुजुर्ग को भी उतना कहाँ पता था उस समय, वो लोग हमें बताते थे कि ये अंग्रेजों ने बनाया है रेलवे इसलिए नहीं डूबती, तो ये बिहार सरकार से हमने बनाया है सड़क। मैं तब भी नहीं समझ पाता था ये क्या है, कुछ मैं उसमें समझ नहीं पाता था तब तक, जब तक कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में गया और मैनेजमेंट के बारे से इसके बारे में मेरा तारुफ हुआ। तब मुझे पता चला कि अंग्रेजों ने उस समय बिहार में, जब नील की खेती पहले हो रही थी और बिहार के रिसोर्सेज, बिहार के मजदूरों को वहां से ले जाने के लिए जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया, तो उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि हमारा रेलवे लाइन डूबना नहीं चाहिए, और इसके लिए उन्होंने डिजास्टर की एक बेहतरीन सर्वे करवाई। तमाम जो सैलाब रहा और सैलाब का जो एक लेवल रहा पिछले 100 साल का, उसका सर्वे करवाकर उससे कम से कम 5 मीटर ऊंची पटरी रेलवे लाइन उन्होंने बिछाई, जिसकी वजह से चाहे पूरा बिहार सैलाब में डूबा हो लेकिन बिहार के मजदूर कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच जाते थे। हमारे नील, हमारे गन्ने, हमारे फसलें वहां तक पहुंच जाती थी। और आज जब मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आता हूँ और मेरा कैडर ये बनता है और मैं बड़ी विस्मित होकर इस जन्नत फिरदौस को देखता हूँ, तो मुझे एक समय फिर लगता है कि क्या बिहार और जम्मू कश्मीर जो कि इतनी ऊंचाई पे बसा हुआ है, सैलाब तो यहाँ आता ही नहीं होगा। लेकिन मेरी ये खुशफहमी 2014 में दूर हो गई। मेरी ये खुशफहमी उस समय भी दूर हो गई जब केदारनाथ का इंसिडेंट मैंने सुना, किस तरह से नस्तनाबूद करने के लिए पूरे शहर को एक डिजास्टर ने हिला कर रख दिया।